Creativity is thinking up new things. Innovation is doing new things. Today, we will celebrate ATAL Community Day as well as Entrepreneurship Day to encourage students about this endeavor. Our school has organized this event in 2 engaging rounds. ATAL Community Day is observed in ATAL Tinkering Labs throughout the country in April to honor Dr. B.R. Ambedkar's birth anniversary. This event also provides an opportunity to explore various dimensions and subtleties of entrepreneurship. I'm thrilled to extend a warm welcome to Sunanda Rao, Regional Mentor, AIM Niti Aayog. Can anyone show me, share with me their experience when they have displayed something to a jury or a judge and they were not shortlisted? The first 30 seconds, how you display your project, that attunes to the next 3 minutes or 4 minutes of the span of the judge. And I am telling you from the shoes of a judge what happens. When you are displaying a project to a judge, they will judge you in first 30 seconds. And this is the psychology of the judge. जब हम लोग देखते हैं ना, हम वो first 30 seconds में अपना impression बनाते हैं. तो आप लोग नेक्स्ट टाइम जब भी जाएंगे किसी भी मैराथन में, किसी भी जगह पे जहां आप शोकेस कर रहे हैं प्रोजेक्ट, आपके वो फर्स्ट 30 सेकेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट. कि आज के दिन में हम जो ना बच्चों को फेलियर वाली बात बताते ही नहीं है कि हमें कैसे सक्सीड करना है. पहली चीज, आप जो भी कोड बनाते हैं, आई एम श्योर योर मेंटर्स आर हेल्पिंग यू, राइट, बट टेक होल्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. Because what happens is, when you are showcasing, your mentors are not alone. So whenever you are showcasing the project, leave apart, आपका idea बन गया, prototype बन गया, आप उसको display कर रहे हो. जो तो first 30 seconds में आपको जो impression create करना है ना, वही matter करता है. And for that, you have to rigorously do a mirror exercise. Mirror exercise वो होती है कि mirror के सामने आप खड़े हो और वहाँ पे आप exercise कर रहे हो, not aerobics या yoga. आप एक्सरसाइज कर रहे हो कि कैसे आपको बोलना है. You have to impress yourself. जब आप किसी प्रोजेक्ट को डिस्प्ले करते हो और टीम के साथ जाते हो, डेलीगेट कौन क्या बोलेगा, कौन कौन सी एक्टिविटी करेगा. दूसरा, जब आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हो तो आप बहुत स्ट्रेस में होते हो. जब आपके सामने जज होता है और आपके पास मुश्किल से 1 या 2 मिनट का टाइम होता है डिस्प्ले का, at that time you have to work on the teamwork. So these are 2 sets of things which I wanted to tell you. One, do a rigor mirror practice. Second is, please ensure that when you are with your team, each member acts in a unique way. Wishing you a very happy community day. Without any further ado, we would like to call upon stage Mr. Divyajyoti Mishra to conduct a session on creativity and innovation. Sunanda ma'am has given a wonderful session. That is the core of this ATL or Tinkering Lab. That we forget that what tinkering is. Can anyone tell me what tinkering is? Yes? Innovation. Innovation, The okay. process of innovation. So what does Tinkering Lab means actually? Let's start with a simple question. What does this Tinkering Lab means? Anyone else? Yes? So we can say Tinkering Lab means a place where we could innovate and make new things. How does it different than your science lab? So in science lab we mostly see the things that are already been invented by different scientists. However, in innovative lab, or you can say tinkering lab, we make things by ourselves by innovating. Like if we put some components together, by joining wires together, we can make something new out of ourselves. I think tinkering means trial and error. So tinkering lab means like we try to make something and we fail, and we do that over and over again to make something. Great. So this is a main difference between tinkering and your science lab. ठीक है? Science lab में I think which class we are having? Do we have 9th or 10th class over here? Can I see the hand? Okay, great. Who is from class 8th? Class 7th? Class 6? Okay, few guys from class 6 also. So what happens during the science lab?
you are given a guided experiment, right? किया है ना आप सबने? आपको स्टेप फॉलो करने होते हैं. Whether you are doing a chemistry test, whether you are doing any biology test, you are given a proper instruction कि इस तरह से आपको ये perform करना है. But tinkering is different from that. Here you have to fail. You have to try your mind. You have to create yourself. You have to think out of box. And in most of the cases, you might fail. But this is not the end. किसी ने वो थॉमस एल्वा एडिसन का सुना होगा ना? When he created the bulb, okay, more than 999 times it got foiled. Sometimes the metal was not correct. Sometimes the gases are not correct. But still he tried again and again, and we have a bulb, incandescent bulb, right? So this is what tinkering is. And for this, it's very much important that you are prepared for the 21st century skills. Okay? So what is the focus of this tinkering lab, if I talk and we start our presentation in that way? Tinkering lab is to make you prepare for the future. Because we know that future is going to be very unpredictable. कितने लोग चैट जीपीटी जानते हैं? कितने लोग अपना असाइनमेंट या होमवर्क कर रहे हैं उससे? ओके, अभी ज़्यादा कॉपी नहीं हो रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है. कितने लोग ऐसे एआई टूल्स जानते हैं जिससे पिक्चर्स या वीडियो जनरेट किए जा सकते हैं? यू आर सीइंग दैट, राइट? तो एक बंदा जो ग्राफिक डिजाइनर था, उसकी जॉब तो चली गई. हाँ, I think many of you have participated in the Ghibli trend. Okay, so this is what future is going to be. It's going to be very unpredictable, and for that you have to prepare with certain skills that will be with you. कोई भी टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंजेस आए, it doesn't matter if you have those 21st century skills. And today we are going to discuss about those things. The first one is creativity, second one is innovation, and how you can unleash these kind of potential through your tinkering lab. Okay, so before starting the session, my name is Divyajyoti Mishra. So let's start with the presentation. So the question arises, why this is important for you guys? Because you guys are the future. Okay, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, you guys are the future of our India. So you have to learn certain skills so that you can be prepared for the better tomorrow. Okay? You have to become a creative thinker and problem solver. Believe me guys, when we used to take an interview for anyone who is going to join our company or association, we don't ask what kind of marks you have got in science or mathematics. We ask what kind of project you have done in your BTech final year. Okay, how have you solved that? What kind of problem have you addressed? And do you really have that particular skills that you are talking about? We test that skill. So it's very much important that you become a creative problem solver. Okay, and the third is how technology can empower your imagination. AI is changing the world, so it's very much required that you get in the game, okay, learn these kind of skills that can improve your future, and relate the real world problem with the academic solution. Like, I hope every one of you are working with ATAL Tinkering Lab, so you know the technology behind automatic doors. ऑटोमेटिक डोर्स के पीछे की टेक्नोलॉजी को पता है? कौन सा सेंसर यूज होता है? IR सेंसर. IR सेंसर के पीछे की साइंस को आपने कहाँ पढ़ा था? किस क्लास में? उसके पीछे की एकेडमिक्स क्या है? What is the working principle between IR sensor? There are two LEDs. One is an infrared ray LED and one is a receiver LED. So the infrared LED produces infrared light which we cannot see, and the receiver LED sees the light which is bounced back by the infrared LED. So which chapter of your book has this concept? Sir, I don't think I have read that in my book. Really? Yes sir. Okay. Class 4th में आप सबने एक concept पढ़ा होगा. In summer we wear light colored clothes. Why?
Because it reflects the heat. And in winter we wear dark colored clothes because it. So this is how the IR work. IR is what? Infrared waves. Infrared wave is what? The heat waves. समझ पा रहे हो ना आप सब? जो आपका sun है, which is the main source of energy, what is it emitting? The high intensity light, right? Which is in the form of IR rays reaching to you as a heat waves, right? और वही एनर्जी जब आपके लाइट सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो IR सेंसर वर्किंग हो जाता है और डार्क सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है. And this is how the line follower works, right? So this is very important that whatever you are learning in your ATL also, you relate it with your academics. Then only your holistic understanding of the concept will be getting more clearer. ठीक है? So these are the 21st century skills. I hope everyone are aware about it. First one is critical thinking. What do you understand by critical thinking? Anyone? Yes? Solving, thinking about solutions for problems. Okay. Thinking तो सबको पता है. What is thinking? Okay. Now what is critical? Important. It's a negative term, right? Critically. हम कहते नहीं है situation is very critical. Okay. So why is negative thinking is being approached over here? Critical means thinking all the facet. यानी जो भी उसके pros and cons हैं वो सबको सोचना. That is all about critical thinking. Let me give you a small example. जैसे आप कार खरीदने जाते हो, okay, and you have a budget of 15 lakh rupees, okay. उससे पहले आप एक शॉप पे गए, वहाँ पे आपने कुछ 20 रुपए का खरीदा, okay, and the cost was 19 rupees. There was 1 rupee change. तो आपने क्या किया? जो सामने टॉफी रखी थी, कोई भी एक टॉफी निकाल ली. Have you thought about that कि मुझे कौन सी टॉफी पसंद है, क्या है क्या नहीं? It's just a matter of 1 rupees. You have taken out the toffee. But when you are going to buy a car, which will cost you more than 15 lakh rupees, now what you are going to think? What is my which car will suit my family? Whether it will be 5-seater or 7-seater? Which color should I go with? Which brand should I go with? Which company provide better services? You are understanding this, right? So you are going to think about all the facet of that thing, and then you are going to make an informed decision. So critical thinking is what? Using your logic, reasoning, and your acquired information when you make an informed decision. It's called critical thinking. Second thing is creativity. आज का जो topic है, what is creativity? Thinking out of box. ठीक है? हम आगे discuss करेंगे इसको. Innovation, yeah, making things more easier or more user friendly is called innovation. Problem solving, okay, collaboration, जैसे अभी सुनंदा मैम ने बोला, teamwork is very much required because what as a judge, me or Sunanda ma'am will only have 30 seconds to judge your project, okay, and in that 30 seconds, a person whose presentation skills or whose story excite us, we will keep focus on them. आप कोई भी प्रोजेक्ट सॉल्व करते हो, आई थिंक किसी का एक था ना ये क्वेश्चन जो प्रोजेक्ट सबमिट नहीं हुआ था सीबीएसई में, या यू गाइस. सो आपने जैसे प्रोजेक्ट बनाया, क्या आपने उसके पीछे की स्टोरी बनाई? तो स्टोरी का कुछ ऐसा हुक आपका होना चाहिए था जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, जो सीधे जो है जज को लग जाए कि हाँ आपने कुछ इंटरेस्टिंग बनाया है. So that is very much important because guys, कहीं ना कहीं टेक्निकल के साथ you have to sell yourself also, okay? So आपको सेल्स और टेक्निकल दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है, right? Here you have to sell your ideas also, okay? So that for that collaboration is very important, and then leadership and initiatives. जैसे how many of you like cricket? किसको क्रिकेट अच्छा लगता है? So हम बात करते हैं धोनी को एज अ कैप्टन, ही इज कूल एंड calm, but why we make him like a
a very good captain? Why we think that he is a very good captain? He's actually a very great captain because he manages the team very well, and all the players listen him to very well because of his actually playing also. A leader should also play very well, that his team respect him. Yeah, mutual respect is there, and at the same time you should know the weakness and strength of your team. किसकी क्या weakness है, किसकी क्या strength है, and then you utilize them properly. That will be your leader skill. आप collaboration में टीम में जाते हो तो आपको पता होना चाहिए किसका टेक्निकल अच्छा है. अगर कुछ एरर आता है तो कौन जल्दी से रिजॉल्व कर सकता है. So you have to take control of those things. मेंटोर के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट नहीं रहना है, राइट? फिर आपको सोचना है किसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, क्या अच्छा बोल सकता है. दैट शुड बी द हेड ऑफ द प्रेजेंटेशन, राइट? सो इस तरह से आपको पूरा लीडरशिप यानी टीम वर्क लेके चलना है. ये कैसे जो है इन द इवेंट यू विल बी वर्किंग इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर so that you can get shortlisted in that. Now this is the importance of 21st century skills. As I have discussed that the current scenario is very unpredictable. There are new technologies coming, but if you have these kind of skills, you will be secured in the future. Okay, these skills will boost your creativity and problem solving skills. And कितना भी AI आ जाए, problem solving के लिए, creativity के लिए, human mind will always be preferred. ठीक है? So it will be like a new computer, AI, but tools को use कैसे करना है, that will be human imagination only. ठीक है? Prepare you to optimize AI tool for your work. Okay? अपने work को कैसे optimize कर सकते हो? जो काम करने में आपको 10 घंटे लग रहे हैं, क्या आप उससे ऑप्टिमाइज करके 1 घंटे में कर सकते हो? दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. यू शुड लर्न. एंड हाउ यू कैन लीड अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी. ओके, फॉर दोज these 21st century skills is very much important. Now, how you can gain these kind of skills? You can gain it through robotics or STEM that you are learning in your tinkering lab. You can learn it through artificial intelligence, and you can learn through STEM. ठीक है? STEM जानते हो आप सब? Science, Technology, Engineering, Mathematics. So अभी मैंने जैसे बोला, आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, whether you are using ultrasonic, whether you are using IR, कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, उसके पीछे की साइंस भी समझो. क्योंकि जब आप साइंस समझ जाओगे, this is called first principle thinking. आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहते हो, अगर आपके फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग क्लियर है, यानी आपके फाउंडेशन क्लियर है, तो आप उसको मल्टीपल एरियाज में यूज कर सकते हो. समझ पा रहे हो ना? आप IR से सिर्फ ऑटोमेटिक डोर नहीं बना सकते हो, ऑटोमेटिक फॉसेट भी बना सकते हो, आप काउंटर भी बना सकते हो कि कितने लोग रूम में एग्जिट हो रहे हैं, कितने लोग एग्जिट हो रहे हैं, राइट? एंटर हो रहे हैं, कितने लोग एग्जिट हो रहे हैं. तो अगर आपको फर्स्ट लेवल थिंकिंग पता है तो आप यू कैन यूटिलाइज इन एनी ऑफ द फील्ड्स. ओके, दैट इज व्हाई यू शुड अंडरस्टैंड द STEM. नाउ टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? Just first of all, intelligence. And intelligence is our ability to think of things, or you can say innovate and more. And artificial is what we have made, like what is not natural but has been made through experiments and more. So if we combine those two words, artificial intelligence meaning like machines are acting like us, they have their own brains to make decisions and work like us, however in a more approved and a faster way. Okay, great. The ability to solve problems. अच्छा, तो अगर कोई जानवर है वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएगा तो? No, like for ourselves. Okay, so let's simplify this term intelligence. Intelligence is the ability to learn, okay, to understand and gain certain skills that you can apply in solving any problem. समझ पा रहे हो ना? Simpler term में. Okay, as a human we can learn many things. We have a general intelligence. Okay, we can learn math, science, music, dance, anything. But first of all we have to learn, then understand those things. अब आप Chinese पढ़ने गए, you are learning the Chinese but you are not understanding it. Will you gain any skill? No. Okay,
So those things is very much important. So when we talk about artificial intelligence, this learning and understanding part is grouped together as a machine learning. क्या कहते हैं इसे? Machine learning. And the tool where we are going to apply it and create any product out of it, that will be artificial intelligence. Okay? जैसे for example chat GPT, सबने यूज किया है? What does it do? क्या करता है chat GPT? हाँ जी. So as when ChatGPT was first released, there was a side note written on it that ChatGPT can make many mistakes. So please verify your answer. It was because that it learned from our responses. Many of the chat bots like we use in our daily life, they understand they understand the way how we talk to them and how we express our expressions to them, okay, and good. what the questions we ask. Good. So basically what goes behind the chat GPT is that we have trained the AI on all the written content available in the internet. ठीक है? Internet is a very vast. We have all the digital copies of written content available in the internet. So what we have done, we have trained a model that can understand all the written content. और उससे इसने क्या सीखा? Natural language processing. Okay, sit down. उससे उसने क्या सीखा? Natural language processing, जिसे कहते हैं कि human बात कैसे करते हैं? What is a way of talking? ठीक है? How human create or frame their words or sentences. Basically उस AI ने यही सीखा है. उसने कुछ और नहीं सीखा है. ह्यूमन बात कैसे करते हैं उसने बस यही सीखा है. आप जैसे पहले गूगल पे सर्च करते थे तो गूगल गिव यू द लिंक्स, यही होता था ना? गूगल गिव यू द लिंक्स कि ये अच्छा जो आपने टैग्स किए हैं, जो आपने सर्च किया है, वो ये सारे लिंक्स पे आपको मिल जाएगा. बट अब चैट जीपीटी में क्या किया है? वो भी वही चीज ढूंढेगा. ओके, बट उसको पता चल गया है कि ह्यूमन बात कैसे करता है, तो वो उसको एक प्रॉपर सेंटेंस में फ्रेम करके आपको दे देगा. ठीक है? तो जो भी क्वेश्चन आप पहले पूछते थे गूगल पे और आपको सिर्फ लिंक मिलता था कि आपको खुद जाके उस लिंक को पढ़ना पड़ता था, नाउ AI has simplified that thing and give you the answer in a simplified sentence. So this is AI. समझ में आ गया ना कैसे चल रहा है AI और ये सारी टेक्नोलॉजीज? So this you have to understand from a very basic understanding. So we are discussing about creativity. Creativity, as we have discussed, is ability to learn from the think out of box. Okay, let me give you an example. In 90s, 70s, it's was believed that computer are for the scientists and researchers only. क्योंकि वो बड़े बड़े बल्कि से अलमीरा जैसे कंप्यूटर हुआ करते थे. कभी देखा आप सबने अपनी कंप्यूटर बुक में? ठीक है? But guys like Steve Jobs, Bill Gates, they have a vision that there should be a personal computer. Okay? So what they did, they implemented on their vision, and now everyone has their own PC. है ना सबके पास? कहीं ना कहीं लैपटॉप या कुछ स्मार्टफोन तो होगा ही आप सबके पास. ठीक है? So this is what creativity is. When you think out of box, अगर आप उसी माइंडसेट में रहते हैं कि नहीं ये तो सिर्फ रिसर्चर और साइंटिस्ट के लिए हैं, तो आज जो ग्राफिक डिजाइनर हैं, जो और टीचर्स हैं, उनके पास हो सकता है कंप्यूटर का एक्सेस नहीं होता है. राइट? सो दिस इज क्रिएटिविटी. यू हैव टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स. आप ट्रैफिक लाइट देखते हो, ठीक है, क्या आप उस पर कुछ और सोच सकते हो, कुछ एआई को सोच सकते हो कि उससे और ज्यादा ऑप्टिमाइज किया जा सकते, इफिशियंसी उसकी और बढ़ सके? दैट विल बी योर क्रिएटिविटी. गॉट इट? नाउ व्हाट इज इनोवेशन? लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ दिस इवोल्यूशन ऑफ टेलीफोन. ठीक है, ग्राहम बेल ने पहला फोन बनाया था. आप सबने पिक्चर देखे, बड़ा सा एकदम होता था भोपू जैसा, उसमें सब चिल्लाते थे, कान में लगाया जाता था. राइट? फिर उसके बाद क्या हुआ? आपने अगर ओल्ड मूवीज देखी हुई है, उसमें खुर्र खुर्र वाला फोन आया. ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ? बटन वाले फोन आ गए. राइट? फिर उसके बाद क्या हो गया? कॉर्डलेस फोन आ गया. स्मार्टफोन अभी नहीं आया, अभी बहुत टाइम लगेगा स्मार्टफोन आने में. फिर कॉर्डलेस फोन आ गया. अब आप बालकनी में भी बैठे हो या बाहर भी घूम रहे हो, यू कैन टॉक विद योर फ्रेंड. ठीक है? फिर मोबाइल फोन आया.
नोकिया आया, यस, अ हैमर ऑफ अ फोन, ओके। उसके बाद आया स्मार्टफोन। नाउ ऑल द टेक्नोलॉजी, आपको कैमरा चाहिए, वो उसी में जो है टेलीस्कोप लगा दे रहे हैं सैमसंग वाले, ठीक है, आप चांद की फोटो खींच ले रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड इनोवेशन, ओके। When you are improving the existing technology, adding more features in it so that it become more user friendly, this is what innovation is, okay. So if you guys have to think for certain ideas, think of the problem statement that you are seeing in your daily life, okay, the technology that is there to solve that problem, and how you can use your creativity to make it more efficient. That will be your innovation. That will give you the next ideas for implementing certain thing or creating certain projects on which you can even build your businesses also. This day is an entrepreneur day, so you have to think in that ideas कि अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाता हूँ जो रियल टाइम इश्यूज को सॉल्व करता है, एड्रेस करता है, then I can be a entrepreneur. Let me give you a very brilliant solution done by one of the companies. Amazon सबको पता होगा, Amazon, बिग बास्केट, ग्रोफर्स, सबको पता था क्या करते हैं इससे? हम सब ग्रोसरीज मंगाते हैं, राइट? So such kind of giants were already there. You order anything, it will be delivered to you 3 days, within 3 days at your home. But वहीं पे एक बंदे ने सोचा कि अगर मान लो घर में आटा खत्म हो गया है, तो हम क्या 3 दिन तक वेट करेंगे कि नहीं यार अब रोटी तो हम 3 दिन बाद खाएंगे? So he came up with a solution. Let me deliver those things within 10 minutes at your doorstep. And in that concept, उसने क्या किया? Existing technology थी, Amazon वही कर रहा था, वही बिग बास्केट भी कर रहा था, बट उसने उसको और थोड़ा सा यूजर से डिस्कस किया कि क्या उनकी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, और उसमें फिर अपना एक सॉल्यूशन ढूंढा, and it come up with a blanket or such kind of Instamart solution where the things is getting delivered in 10 minutes. So this is what innovation and creativity is, guys. So as I told you, you have to experiment, you have to build, you have to learn, because this tinkering lab is not a guided experiment जहाँ पे आप हमेशा successful होगे. You will face failure, but you should not be deterred from it, okay? That should be a stepping stone for you to get to the next level, to prepare yourself better for the future, okay? Use the tools like 3D printer, sensor, microcontrollers, learn about those things in a very basic concept. सेंसर भी पढ़ते हो, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके साइंस को पढ़ो, क्योंकि सेंसर क्या है? सेंसर आप खुद भी बना सकते हो, आपको हमेशा मिलेगा नहीं, ठीक है? अल्ट्रासोनिक बहुत सारे लोग यूज करते होंगे। व्हाट इज द रेंज ऑफ अल्ट्रासोनिक? बेसिकली 30 सेंटीमीटर तक वो जो है बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग देता है, उसके बाद जो है फिर रीडिंग गोज डाउन। बट क्या आप उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते हो? हाँ, जो रेडार टेक्नोलॉजी है, बेसिकली हम प्लेन्स को डिटेक्ट करते हैं या मिसाइल्स को डिटेक्ट करते हैं, दैट इज ऑल्सो अल्ट्रासोनिक सेंसर। समझ पा रहे हो ना? बट विद अ गुड कैपेसिटी, तो उसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ दोज सेंसर्स, ओके, सो दैट यू कैन क्रिएट सच काइंड ऑफ सॉल्यूशन. It's okay to make mistake, because failure is a step towards success, okay? So how will you solve these problems? Okay, you are making project, the best possible way is using design thinking approach. How many of you are aware about design thinking approach? Okay, great. So basically design thinking approach is a scientific manner in which you can solve a problem. This is a 5-step process. So what happens when you find any problem? First you have to understand as a first level basis problem. जैसा अभी मैंने ब्लिंकेट का एग्जांपल दिया, उसे ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा. You have to take the interviews of the person who is facing those problems. Then only you can empathize with those. Okay, so this is the first step, that understand the problem, empathize with the person who is facing that problem, and then define what is the problem that particular person is facing that you are going to solve.
ठीक है, because we are living in a more you can say a period of time where every problem has a solution. तो फिर इनोवेशन की हम कैसे आएगा? हम कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल क्रिएशन. अगर नेसेसिटी ही नहीं है तो हाउ विल यू क्रिएट, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई what is required, and for that you have to define your problem in a very simplistic manner, and then you have to ideate, then you have to solve that problem. अब उसको ideate करके you will be creating a first prototype. हो सकता है वो proper नहीं चले, during the testing it might get failed, then you have to go back to the prototyping. ये जो step है आपका test and prototype, you have to go back again and again till your prototype is working fine and it clear all the testing. ठीक है? अगर आपके फादर या कोई भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से होंगे तो उन्हें पता होगा कि अगर कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, सो देयर इज अ डेवलपर टीम, देयर इज अ टेस्टर टीम. टेस्टर टीम का यही वर्क होता है कि वो उसमें से बग्स निकालने रहते हैं कि कैसे ये प्रोग्राम आपका फेल हो जाएगा, और डेवलपर टीम उसको रिजॉल्व करती रहती है. जब तक अप्रूवल नहीं मिलता है टेस्टर टीम से, तब तक वो प्रोटोटाइप आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होता है, राइट? सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट स्टेप ऑफ इनोवेशन इज. ओके, सो यूज दिस साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ डिजाइन थिंकिंग अप्रोच टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. ओके, now let's take an example like how you can use real ideas, okay, to solve certain problem. Like let's take an example of SDG goal. हम सस्टेनेबिलिटी पे बात करते हैं, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, but still we see that the pump or the submarine is going on and the water is overflowing from the tanks. It's getting wasted. Or if there is any rain, all the water are getting drained out in the gutters or in a river. It's not being utilized properly. So that is a problem. You can solve it. You can create a small system where it can detect the level of the level at which the tank has been full. जैसे ही वो complete होता है, there should be a buzzer. कुछ घरों में हो सकता है ऐसा automated system पहले से भी हो. जैसे टैंक भरने लगता है वैसे ही बोलने लगता है your tank is full. Okay? So such kind of thing you can create yourself. And you can create certain ground level watering system जहाँ पे आप इन चीज़ों को स्टोर कर सको. तो इस तरह से आप रियल प्रॉब्लम को लेके उसको सॉल्व कर सकते हो. Okay, so that is today's session, guys. Keep exploring, keep experimenting, and yes, keep questioning. जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तब तक आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे. समझ पा रहे हो ना? जब तक आप सॉल्यूशन नहीं पाओगे तब तक आप आगे ग्रो नहीं कर पाओगे. So this is what you have to go do in this tinkering lab. Guys, thank you very much for this session.
Our guest speaker, Mr. Yash Tiwari, is an award-winning international speaker. I would like to call upon our experienced mentor, Mr. Yash Tiwari, to conduct the session on idea pitching for a successful startup. Let us together unleash the innovator inside each of us and welcome sir with a huge round of applause. So first of all, thank you so much for such a warm welcome and thank you for having me today here. अभी सर का मैंने सेशन सुना, मैं पूरा तो नहीं सुन पाया, बट जितना पार्ट सुना मुझे बहुत ही अच्छा लगा जान के that we have these intrigued youngsters जिनके पास हर क्वेश्चन का एक आंसर है and such innovative answers. We are now going to be talking about idea pitching for a successful startup. Let's say you come up with a great topic, you come up with a great concept. आपके पास दुनिया का सबसे ज्यादा इनोवेटिव स्टार्टअप का आइडिया आ गया है. Now what? What will you do next? There are two options in front of you. या तो आप उस कॉन्सेप्ट के साथ सिर्फ बैठे रहेंगे, दुनिया को आगे बढ़ते हुए देखते रहेंगे, or you try to take a step. You try to do something out of it. You try to make something out of it. But उस स्टार्टअप के कॉन्सेप्ट से आप कर कुछ तभी पाएंगे जब आप उसको अच्छे से पिच कर पाएंगे. क्या कोई मुझको यहाँ पे बता सकता है कि आखिर आइडिया पिच करने का मतलब क्या होता है? Anyone? This is a very simple question. Yes, go ahead. That student, blue shirt. And firstly, you have to introduce yourself and your class to everyone over here. I am Kabir Singh Pundi from class 10th from East Point School, and I am with my teammates. And pitching an idea is telling about what we have thought about and what is the idea we've innovated to the funders who will invest the fundings which we require to send our project internationally, globally, and on the market. All right. यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी statement you just stated that as a youngster, as a small child, मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही great concept आया है and you want to get it out in the world. YouTube हो चाहे किसी भी प्रकार से हो, you want to make sure that it represents you and you are representing it to the world as opposed to anybody else. अभी इंट्रोडक्शन में बताया जा रहा था that I started my literary journey at the age of 16. 16 साल की उम्र में जब मैं अपने 11th स्टैंडर्ड को आई थिंक कंप्लीट ही कर रहा था, बस 12th शुरू होने वाले थे एंड बोर्ड्स का जो टेंशन होता है, बोर्ड्स की जो एंजाइटी होती है, दैट आई थिंक ऑल ऑफ यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ. तो मुझे भी उस बोर्ड्स की काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी थी एंड आई वॉज थिंकिंग आई वॉन्ट टू डू समथिंग क्रिएटिव. नाउ ग्रांटेड आई डिड नॉट कम अप विद अ स्टार्टअप का आइडिया, बट आई डिड इनिशिएट समथिंग विच वॉज writing a manuscript, writing a story. एक किताब के पन्नों को लिखना मैंने शुरू किया just because I wanted to do something different even as a little child, as you mentioned, and I wanted it to represent me beyond my academics, beyond the generic एक जो कह सकते हैं conventional life होती है ज़्यादातर युवाओं की. But then writing a book is not enough. You have to pitch it. It is an innovative idea कि एक 16 साल के बच्चे ने एक किताब के बारे में सोचा, बट फॉर इट टू गेट आउट इन द वर्ल्ड मुझे पब्लिशर से बात करनी पड़ेगी, राइट? मुझे एडिटर से बात करनी पड़ेगी, मुझे अपने उस एक सिंगल मेल में ये बताना पड़ेगा व्हाई इज दिस बुक सो ग्रेट, व्हाई एम आई experienced enough even as a 16-year-old to write a book like this and why should it get out in the world. कौन सी ऑडियंस को ये रीच आउट करेगी, कौन सी प्रॉब्लम्स को ये टैकल करेगी. इट्स नॉट अ स्टार्टअप स्पेसिफिकली बट इट इज एन आइडिया. हमारा आज का ये जो डिस्कशन होने वाला है, मैं चाहता हूं कि यस वी स्पीक मेनली अबाउट स्टार्टअप बट वी डोंट रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू दैट. व्हाट वी टॉक अबाउट इज अगर आपके मन में कोई भी कॉन्सेप्ट आता है, कोई भी आइडिया आता है, कोई भी इनोवेटिव प्लान आता है, कैसे उसको दूसरों तक लेकर जाया जाए with one specific skill that you definitely have to work on in all the avenues of your life, which is what my next question is all about. सब लोग मेरे साथ इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, okay? What does the question say? Read it out. What is the one skill that matters the most when pitching your idea?
What is the one skill that matters the most when pitching your ideas? Yes, speak it up. Confidence. On mic, on mic. Your name, and with the same confidence you have to speak it out. Good morning, sir. My name is Viksit Bharat. I am studying in 6th grade. Yeah. The answer of this question is confidence. Confidence. Okay, all right, great. That is true. That is wonderful. Then we have somebody over there as well. Yes. Or maybe you can just stand up. Yes, yes, you only. Don't look back. You can stand up and shout your name out and the answer that you have. Good morning, sir. I'm Sophia Nath, studying in class 8 of Mayo Public School. This is my team. Yeah. So, sir, according to me, the one skill that matters the most is showcasing our ideas, not hesitating about what our ideas are, and showing all its functionalities in our pitch. Okay, so something similar to confidence there. All right. Okay. Wonderful. 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 Then the next student is going to be, yes, you ma'am. Yes, yes. Stand up. Hello sir, myself Anushka, and I think that one skill that you require the most is the ability to persuade the founders. Persuade. You are not just telling them something, you are persuading them. They have the funds, they don't want to give you all the funds, but you persuade them to give you every single penny of the fund that you have asked for. Okay? But still, that does not answer a question. Persuasion. How does one do that properly? Yes, the student right next to you. I think the answer would be the hardworking. Okay, alright. Hardworking definitely matters. Sure, sure. Yes, sir. Yes, you. Yeah. Communication skills. जोरदार तालियां हो जाए एक बार इनके लिए. Every single answer that has been shared over here, we have clapped for all of them, by the way, because every single answer is correct. It is the culmination of the hard work and the persuasion skill and the confidence and the ability to not feel nervous while pitching your ideas. But the one single शब्द, हिंदी भाषा में आपको पढ़ाया जाता है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. वैसे ही यहाँ पे अनेक स्किल्स के लिए जो एक प्राइमरी स्किल पे आपको सबसे ज्यादा काम करना होगा. इफ यू वांट टू persuade somebody and pitch your ideas and get the funds that you require are your. आवाज मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है यहाँ पे. Communication skills and speaking skills. But एक चीज इंटरेस्टिंगली आप लोग यहाँ पे देख रहे हो. I have not listed just one skill, right? There are two words. We have communication, we have speaking. यार दोनों का मतलब तो सेम ही होता है. होता है कि नहीं होता है? होता है? होता है क्या? मुझे हाँ क्यों सुनाई दे रहा है बहुत ज़्यादा? It's not, right? Who all agree that communication and speaking are not the same thing? इन सबकी जरा फोटो ली जाए यहाँ पे. यहाँ पे आधार कार्ड की तरह आप लोग का प्रूफ बन रहा है that yes, you all agree with this. Kindly take the picture of all these youngsters who agree with this. Okay, all right. So you all agree that communication and speaking are not the same. Can anybody tell me how is that the case? Communication में भी तो मैं शब्द ही बोल रहा हूँ, speaking में भी तो मैं सिर्फ शब्द ही बोल रहा हूँ. तो अंतर क्या हुआ दोनों में? Yes sir, you, yeah, go ahead. Sir, basically, my name is Adit Goel. Communication में हम लोग जो सामने वाला बोल रहा है उसकी बात भी सुनेंगे वापस. और स्पीकिंग स्किल्स में हम सिर्फ अपनी बात पिच करते हैं और पुट ऑन करते हैं कि सामने वाला हमारी बात सुने. Alright, एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Wonderful. Communication is a duplex process, and what it means is, मेरे पास दो ऑप्शन है. आपने मेरी तारीफ की, बहुत बढ़िया से मेरा इंट्रोडक्शन बोल दिया. अब मैं यहाँ पे आ जाऊँ और मैं 1 घंटे तक यहाँ पे खड़ा रहूँ और मैं एक स्क्रिप्ट से रीड करके आपको बता दूँ कि अपने आइडियाज कैसे पिच करने हैं. That is a speech. मैं मैम के साथ अभी थोड़ी देर पहले इसी बारे में बात कर रहा था, and मैम shared something very inspiring with me, something very interesting with me, कि जब आप एक बात को ऐसे कहते हैं कि आपके चेहरे पे एक हंसी दिख रही है, and आपके listeners को ऐसा लगता है कि आप उन पे कोई बात नहीं कह रहे लेकिन उनसे बात कर रहे हैं, तब जाके उनको ऐसा लगता है that they are not being persuaded, they are being welcomed.
जो इनोवेटिव प्लान आप उनके साथ शेयर कर रहे हैं, जो आइडिया आप उनके साथ शेयर कर रहे हैं, आप उनसे फंड्स नहीं मांग रहे, आप उनसे कोलैबोरेशन मांग रहे हैं. एंड व्हेन दे फील दैट इज व्हेन दे फील कि फंड्स क्या, सपोर्ट तक देने के लिए हम तैयार हैं. दैट इज व्हाट यू रिक्वायर. इनोवेटिव आइडिया पिचिंग बड़े से बड़े स्टार्टअप, बड़े से बड़े क्रिएटिव प्लान्स की डिपेंड करती है इस बात पे कि आप सिर्फ एक भाषण नहीं सुना रहे हैं. यस, कई बार आपको भाषण भी सुनाना पड़ेगा. When you are reading out your business plan, when you are going to those meetings where you are pitching your idea and you are literally reading out your business plan from a piece of paper. एक business plan जो कि contain करेगा क्या-क्या, आपकी executive summary, यानी कि आपके business किस बारे में है, what is the basic premise of it, what is the problem statement of it, किन problems पे आपको काम करना है, what is the solution that you are providing. आप क्या solution provide कर रहे हैं उस problem के लिए, that your startup is all about. What target audience are you focusing on, and finally आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है, फाइनेंस मॉडल्स क्या है, ऑल ऑफ दैट स्टफ. लेकिन ये सब बता देने के बाद अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा ऑन अ पर्सनल लेवल. आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस. आर्सन देओल, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू वर्क ऑन दिस स्टार्टअप? व्हाट मेड यू फील कंपेल्ड कि सब कुछ छोड़ के सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे काम करना है? हाउ कैन आई बिलीव दैट यू हैव नॉट जस्ट typed something on, let's say, an AI engine, and जो भी concept आ गया आपने बस उसको यहाँ पे read करके सुना दिया, and this is something which you're personally coming up with. What anecdotes or experiences can you quote to substantiate this problem you are mentioning about? That all depends on communication. क्योंकि एक speech सुना देने के बाद जब question and answer का round आता है, वहाँ पे आपकी simple reading skills या speaking skills काम नहीं आएंगी. They matter. But what would matter more are your communication skills. So how does one build that up? And ये जो communication skills हैं, ये सिर्फ कोई startup का idea pitch करते समय तो आपको नहीं चाहिए ना. In your classrooms, let's say your teacher is teaching you something. You have a question in your mind. लेकिन आप वो question raise नहीं कर पाते because you are nervous. You go to a job interview. स्कूल में आपके बिल्कुल 99% मार्क्स आते थे, बहुत ही अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट्स भी आपने इकट्ठे कर लिए हैं, बट व्हेन यू गो टू दैट जॉब इंटरव्यू और कॉलेज के एडमिशन का इंटरव्यू, यू आर नॉट एबल टू स्पीक अबाउट इवन वन ऑफ देम. यू जस्ट फंबल, यू जस्ट स्टटर एंड यू कम आउट ऑफ द रूम. व्हाई? बिकॉज वंस अगेन यू फील एंशियस. Maybe let's specifically speak about that meeting जहाँ पे you are coming up with the greatest of concept and now you have to pitch it to somebody who has all the funds to turn it into a reality, and yet the moment they start asking questions you are not able to communicate because you feel anxious. कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो communication skills है ये सिर्फ एक एवेन्यू नहीं बल्कि जिंदगी के हर एक एवेन्यू में आपके लिए necessary है. These are not optional. These are compulsory for especially the youngsters like you all over here to develop on for every avenue of life. But then, अगर communication skills important है, then why are most people anxious? कितने लोग यहाँ पे मुझको honestly बताओ ये believe करते हैं कि communication skills are non-negotiable in the modern world of today? Hand raise करके. How many of you feel that communication skills actually matter? आप लोग believe नहीं करते ये? Yes, 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 yes. Okay, I can see your hand. All right. All right. Okay. How many of you feel कि सिर्फ communication skills के basis पे आप grow कर सकते हो? Okay, a few hands. How many of you feel कि सिर्फ technical skills के basis पे आप grow कर सकते हो? No hands. How many of you feel कि communication skills और technical skills का जो blend होता है तब आप grow कर पाते हैं? All right, wonderful, wonderful, great, thank you so much. ठीक है, अगर आपने मुझको ये बता दिया कि communication skills इतनी ज़रूरी होती है, फिर मुझको ये भी बताइए, why are most people anxious? एक मिनट, we will definitely ask your answers on that, but I wanted to think about it this way. Think of it in a very serious manner. जब आपको कोई दिक्कत होती है, बीमारी होती है, मान लीजिए अगर आपको जुकाम हुआ, आप जल्दी से डॉक्टर के पास जाते हैं ना कि जुकाम की दवा दे दीजिए, कुछ इसका ट्रीटमेंट दे दीजिए. यू डोंट वेट फॉर 20-30 डेज की चलो ठीक है रहने दो. या अगर आपका हाथ फ्रैक्चर होता है, आई थिंक आई सॉ वन ऑफ द स्टूडेंट विद अ कास्ट, आप वो जो हाथ फ्रैक्चर्ड है
You try to get it, treat it up as soon as possible. Why? Because अगर दिक्कत है तो उसको solve करना होगा. Then why does it happen कि when we talk about something as important as communication skills, the anxieties keep on lingering? तो चलिए अब थोड़ा सा interactions पे करते हैं. I think somebody wanted to speak about why are most people anxious. Yes, go ahead. Your name and then your answer. Good morning, sir. My name is Abir Dubey and I am from the Indrapuram Public School with my team. Sir, I think that in school we learn our speaking skills, our communication skills and many other skills. But the main problem in today's world is that people are not confident of themselves. People are underwhelmed and they think that they cannot stand out. They don't have the speaking skill that it takes. Every person is special. Every person is special. And the 5 fingers in our hand are always not even. But we should always believe in ourselves because the one above always has better plans for all of us. ये बंदा बहुत ही कॉन्फिडेंट है. एक बार इसके लिए तालियां हो जाए सबका. वंडरफुल, वंडरफुल. अगर आपकी ग्रामर कहीं पे गलत हो गई तो लोग क्या कहेंगे? अगर आपका कॉन्सेप्ट आप बहुत क्लियरली नहीं कन्वे कर पाए तो लोग क्या कहेंगे? ओके, ग्रेट. यस, you can scream out if you want to. It's totally fine. Yeah. Sir, I am Shaurya Tiwari from Bharati Public School, and stage fright can be a reason why most people get anxious, which is also my problem. Okay, but that is for stage fright, right? Let's say if I ask you to come over here and share your answer, that is understandable. But what about speaking over there, sitting with your friends? Fear of failure. Fear of failure. कई बार होता क्या है कि मान लीजिए कोई एक्सपीरियंस स्पीकर है, वो आपके साथ अपने थॉट्स शेयर कर रहा है. That matters a lot. Like that is innovative, that is unique, that is special. But पता है सबसे ज़्यादा courage किस बात में लगता है? For you to be over there and for the very first time share about your anxieties, your nervousness, your experiences as you mentioned in front of everyone else. That is the most courageous act, if you ask me. As a professional speaker, अपने thoughts को share करना आपके लिए एक skill होती है जो कि already आपने build up कर ली है. But as a youngster, as somebody who is not experienced, and then too, यहाँ पे 100-200 लोगों के बीच में अपने thoughts को share करना, that takes muscle. So एक बार अपने लिए आप सब लोग तालियां बजाइए. A very huge round of applause. Thank you so much for that courage. Now to summarize all the brilliant answers that have been shared with us, कुछ specific points हमको जानने को मिले from this interaction. Firstly, एक लैंग्वेज एंजाइटी होती है. कई बार आपको डर लगता है, ये एंजाइटी होती है कि लोग क्या कहेंगे. अगर आपका अपनी लैंग्वेज पे अच्छा कमांड नहीं है, लेट्स से यू हैव बीन आस्क्ड स्पेसिफिकली टू स्पीक इन इंग्लिश, बट यू फील दैट यू डू नॉट हैव अ गुड कमांड और अ गुड वोकैबुलरी व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश पर्टिकुलरली, सो यू विल फील एंशियस. Even with the greatest of concepts or ideas or experiences, you still will feel anxious क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप अपनी भाषा पे पकड़ नहीं बना पाए तो आप अपने विचारों को कैसे ही शेयर कर पाएंगे. Secondly, another major reason is the lack of specifics. अब ये पॉइंट अभी हम लोग थोड़ा बाद में कवर करेंगे, बट अगर वेगली अभी मैं आपको समझाऊं तो होता क्या है कि कई बार आपके पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं. आप ये कह देते हैं कि आपको वर्ल्ड हंगर सॉल्व करना है, आपको क्रिएटिविटी दुनिया में लाना है, आपको यंगस्टर्स में मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना है. बट जब मैं आपसे पूछता हूँ हाउ, स्पेसिफिकली हाउ, व्हाट पर्टिकुलरली विल यू डू, आपके पास उसका कोई आंसर नहीं होता. यू हैव ऑल द क्वेश्चंस, यू हैव ऑल द क्यूरियोसिटीज, बट यू आर नेवर ट्राइंग टू कम up with a unique specific answer that you can share, and so आपकी anxiety का एक कारण ये भी बन जाता है. Then of course we have the point of self comparison pitfall. आप अपने दोस्तों के साथ खड़े होके कुछ बात करना शुरू करते हैं. You all watch the same movie in the theater and you start talking about that movie. But आपको लगता है कि आपका एक जो friend है वो ऐसी शताब्दी की स्पीड से फर्राटेदार अंग्रेजी में बात कर रहा है with such a pace and such a speed कि आप तो उनको मैच ही नहीं कर पाएंगे. तो मतलब ही क्या है उस कन्वर्सेशन में अपने दो विचार शेयर करने का. अब ये तो एक बहुत ही इनफॉर्मल सिनेरियो है. लेट्स टेक इट टू अ फॉर्मल प्लेस. यू कम अप विद अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, यू कम अप विद अ ग्रेट आइडिया फॉर अ स्टार्टअप एंड द टीम हु इज गोइंग टू फंड इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू. यू पार्टिसिपेट इन अ कॉन्टेस्ट और समथिंग जहाँ पे फंडिंग मिल रही है यूथ स्टार्टअप्स को. बट आपको ये लगता है कि बाकी के जितने यंगस्टर्स के आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स हैं एंड प्लान्स हैं स्टार्टअप्स के,
so professional, they look so experienced, they look so smart. कैसे ही आप उनसे compete कर पाएंगे? And so उस कॉन्फ्रेंस हॉल में एंटर करने से पहले ही जहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है, you have already decided in your mind कि क्या ही फर्क पड़ता है, how can you possibly stand up to their standards, and of course the anxiety begins to rise and communication begins to fall, which brings us to the final point, लोग क्या कहेंगे. अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है लोग क्या कहेंगे, इसके लिए बहुत ही बढ़िया एंटीडोट है. Does anybody know? It's a very cringy statement. It's an old song if you remember. तालियां हो जाए, बिल्कुल दोनों ही आंसर इसके. कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना. And I know this sounds too philosophical, this sounds too preachy and cliche and vague, but ये जो philosophical answers है ना, यही आपके सबसे बड़ी से बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए एक आंसर बनते हैं. जब आप खड़े हैं उस पैनल के सामने जिनके पास सारे फंड हैं आपके स्टार्टअप्स को एक रियलिटी में तब्दील करने के लिए, वहां पे टेक्निकल आंसर्स जो आपके मन में आ रहे हैं शायद वो काम ना करें, बट वो जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का बूस्ट है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. वोकैबुलरी बिगड़ेगी बट लोगों का काम है कहना. इंग्लिश पे भले कमांड ना हो बट आई विल स्पीक बिकॉज लोगों का काम है कहना एंड मेरा मन है बोलने का. That is what matters, like you said, but with of course simpler and softer terms. So all of these answers are pretty great. Now the reason अभी हम लोग ने इतना ज़्यादा समय ये problems को cover करने में क्यों लगा दिया, rather than directly jumping onto the solution, क्योंकि जब तक आप root cause को नहीं समझते, जब तक आप actual issue को नहीं समझते, तब तक आप किसी ailment को cure कैसे कर सकते हैं. जो मैं जुकाम बुखार का एग्जाम्पल आपको दे रहा था, that is healed, that is ailed only when the root cause is understood, right? So even for your communication skills, the lack of it is dependent on why do you lack those communication skills. जब वहाँ पे काम करना शुरू करते हैं, तब जाके अपनी communication skills को हम build कर पाते हैं. Which brings us to the next big question. How do we actually go on to build these communication skills? एक यहाँ पे बहुत ही थ्योरेटिकल अप्रोच हो सकता है. मैं आपको सारे आंसर्स रेडली बता दूं, आप 4 नोट्स बना लीजिए और यहाँ से निकल जाइए. बट एक थोड़ा मजेदार अप्रोच है और आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं उस अप्रोच को टू स्टार्ट विद. रीड इट आउट लाउड लाउड, ओनली दिस पार्ट. अब एक साथ बोलिए ताकि मुझको समझ में भी आए. The movie trailer. एक मूवी का ट्रेलर आपको क्या बताता है, कोई मुझको बता सकता है? Anyone? Yes. What is going to happen in the whole movie? All right. You also want to say something? Yeah. It gives us a basic review of whatever will happen. So according to our interest, we can engage in the further movie. आप जब किसी पैनल के सामने अपना स्टार्टअप का आइडिया पिच कर रहे होते हैं, what are you asking them exactly? You have come up with a great concept, but you don't have the money. They have to give you the money. आज के ज़माने में अगर आप थिएटर मूवी देखने जाते हो, एटलीस्ट मिनिमम कॉस्ट क्या 500 से 1000 के बीच बैठती है, राइट? नियरली दैट इज द कॉस्ट इफ यू गो टू अ मॉल. यू आर गिविंग योर मनी टू अ सर्टेन मूवी मेकर टू वॉच देयर मूवी. थिंक ऑफ योर सेल्फ as the person who is funding the startup which is basically a movie. आपको वो मूवी थिएटर तक ले जाने के लिए, आपसे वो 500 रुपए का टिकट खरीदवाने के लिए, जब एक बढ़िया ट्रेलर आपको YouTube पे मिलता है, तभी तो आप वो मूवी देखने जाते हैं, राइट? तभी तो आप वो प्रोडक्ट which is a movie उसको परचेज करते हैं. That is what happens. It's thinking about the biggest of scenarios on the smallest of scales. तब जाके आपको एक्चुअल आंसर्स मिलते हैं. एक मूवी का ट्रेलर आपको इतना एक्साइट और इंट्रीग कर देता है, जो कि सिर्फ 2 मिनट का होता है, कि आपकी इवन एक 2 घंटे की मूवी देखने का मन कर जाता है, इवन इफ इट माइट बी कॉस्टिंग यू समथिंग, नॉट जस्ट योर टाइम बट इवन योर मनी. दैट मैटर्स अ लॉट. जब आपकी दिन में 3 कोचिंग चल रही हैं, 8 घंटे का स्कूल है, देन टू आपका मन करता है कि 2 घंटे निकाल के यू हैव टू वॉच दिस मार्वल की मूवी बिकॉज ट्रेलर बहुत ही ज्यादा बॉम्ब लग रहा था. दैट हैपेंस. सो नाउ वी हैव टू थिंक अराउंड द सेम लाइंस, नॉट थिंकिंग अबाउट द स्टार्टअप के बड़े से बड़े आइडिया ऑलरेडी, बट थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ एज समबडी जो कि एक मूवी को प्रमोट कर रहा है. This is an audience sitting in front of you. You have to act like a verbal trailer for your favorite movie. ठीक है?
कॉन्सेप्ट यहाँ पे वही होने वाला है जैसे कि अगर आप अपने एक स्टार्टअप के आइडिया का बिजनेस प्लान पिच करेंगे, यहाँ पे आपको पिच करना है अपनी फेवरेट मूवी का कॉन्सेप्ट। यू हैव टू basically persuade everyone sitting over here to watch the movie that you think is your favorite one. 2 मिनट के आंसर आपको ये आंसर देना होगा. I am not giving you any directions about it. It is totally up to you. Whether you do that based on the actors who are in it, whether you do that based on the concept it caters to, whether you do that based on the message it conveys or the brilliant music or whatever it might be that makes it your favorite movie. How can you make the youngsters sitting over here watch the movie that is your favorite one? That is the first task that you have to complete अगर अपने startups को effectively communicate करके pitch करना है. Ready है कि नहीं है? Yes sir. आवाज तेज आनी चाहिए. All right. Okay. So who would like to give it a spin? Who would be the first student to break the ice and pitch their favorite movie? And the first student is going to be you, sir. आगे आ जाइए. तालियों के साथ स्वागत किया जाएगा. Yes. Come on the stage. Which movie are you going to speak about with us? Sir, I'm going to be speaking of my favorite movie, which is The Martian. The Martian. That is one of my favorite movies as well. So you have 2 minutes on the clock. आपको मूवी का ट्रेलर वर्बली देना है यहाँ पे सारे यंगस्टर्स के सामने and persuade them to watch this movie. Why should they watch it? And your time starts now. Good morning everybody present here. Today I, Abir Dubey, will be telling about your very special movie. Just think about it. Have you ever thought of getting lost in space? A vast vacuum with no one to talk, no one to interact, and you are left alone, left by people, scared, no oxygen. So you must watch Martian. Martian. This movie treats on the very vast topic of space. Space, as interesting as the ocean, as big as the Himalayas. It is a very interesting topic to study about. Engineering field, ISRO, NASA, and many much more things. The Martian movie treats on a very special astronaut who was a pre-biologist. Astronaut which goes to Mars, but from technical superiorities or technical errors was left there all alone without any support. And you know what he said over there? Instead of crying and holding on to their life, he said, I will have to science the problem out of here. Growing crops from exploring the whole planet. The movie treats on how a courageous person can change his life and being back himself alone. It tells that how we can survive in many difficult situations, in problem, if we have the power over here and not over here. The willpower, the brain power, which matters more. Science and bio, everything is mixed up in the movies with emotion, humor, and much more. The movie is a movie you can write your school reviews on as well. A very special movie which not treats on like movies like Sikandar and much more, which just treat on violent action scene, bloodshed and much more. So please guys, for the sake of movie and for the sake of entertainment, go and see this movie. Instead of hitting someone watching these movies, you will learn new things. Thank you. Wonderful, wonderful. I have some follow-up questions for you. कितने दिन से आप ये आंसर प्रिपेयर कर रहे थे? Sir, I made it on the stage. दोबारा एक बार ताली हो जाए. That does deserve it, right? And I'll make sure कि जब मार्शन का सीक्वल बन रहा है तो आपको मार्केटिंग टीम में हायर कराया जाए. Yes sir, I will do well. Yeah. Okay, thank you so much. Thank you. All right, wonderful. Who would like to follow that up? Who dares to challenge the Martian over here? Okay, somebody wants to come from the back rows, perhaps? Anyone? Anyone? No one? All right, the next student is going to be you. Yes, come forward. तालियों के साथ स्वागत किया जाए.
Nancy Chen from Sneh International School, and I'll convince you to watch Ambedkar's Guide to Murder. This is basically a book which is adopted into a series. Now imagine you're a high schooler. Ever since you've been attending the school, there's this rumor going around about Andy Bear. She's been murdered, but after so many years, you finally get the choice to open that case. What will you do? Well, Pip decides to open it up, and she discovers some secrets the police don't even know exist. Some things that have some cracks and make no sense. Suddenly, interviewing people, she comes across multiple other life scenarios of Andy, where she finally figures the courage to go and discover more. But suddenly, someone from Pip or her friends is trying to get her into trouble, is trying to convince her to stop this investigation. It is scary, it is thrilling, but it is just everything a watcher needs. It's convincing you to get that goosebumps. That is convincing, but also extremely scary. Imagine you're going out for camping. Suddenly someone is spying on you. You go there, and when you come back, there is a note left saying, "Stop doing this." What will you do? Well, Pip decides to go further and search. Well, if you want to know what happened further, you definitely need to watch it. Thank you. Thank you so much. Wonderful, wonderful. जोरदार तालियां हो जाए. Thank you. I really feel कि यहाँ पे सारे students को ज़्यादा ही prepare करके आए हुए हैं. But no, this is really wonderful. Thank you. All right. So, some very interesting answers and performative presentations we have been we have been blessed with, we have been entertained with, and I am certain that I've already watched The Martian. Still मैं एक बार दोबारा देख लूँगा. A Good Girl's Guide to Murder. I think I'm gonna read the book as well as watch the series. So thank you so much for it. Now, moving forward, because we do have some time constraints. यहाँ पे I know कई सारे और students का भी मन था अपने favorite movies and TV shows के trailer present करने का. So what we are separately going to do is that you have to make out a video recording of yours. ठीक है? 2 minute का video recording with the help of your teachers and mentors you can prepare, and you can share it with their AIM lab. We will make sure that they are circulated. We will make sure that your efforts to build up your communication skills are also appreciated. So make sure to record those videos and share with us. But right now, moving forward with our conversation, let's talk about how to build your communication skills. So, communication skills को build करने के 2 approaches हैं. As always, a theoretical approach, then a practical approach. When we look at the practical approach, एक चीज हमको पता चलती है कि सबसे ज्यादा जो मैटर करता है कम्युनिकेशन में वो होता है स्ट्रक्चर. यहाँ पे स्टूडेंट्स ने आके अपने आंसर्स शेयर किए. Why did you feel entertained? Can somebody tell me that exactly? What was the reason for feeling so entertained? Yes, go ahead. Yeah. Voice modulation. Voice modulation, all right. They were communicating, all right. Just speak it out loud. The way they are making up the sentences. The way they were making up their sentences, yes. Sir, they are hand actions like for the Hand gestures, all right, all right. Something else? Yeah. Sir, their humor. Enthusiasm? Yeah, go ahead, go ahead, go ahead. You can speak, you can speak. Because of their energy. Because of the energy. Now you stand up, the one who stood up earlier. Sir, because of their humor. Because of their humor, all right. You want to say something? Sir, because of the eye contact. Eye contact? Sir, because of the communication skills and their confidence. Communication skill and confidence? Sir, raw dogging their words without any worry. I couldn't hear it. Sir, raw dogging their words without any worry. Can we hand over the mic? I can hear the answer. So all of them were raw dogging their words without any kind of a worry. Yes, there was no worry, there was no nervousness about it, sure. So because of their body posture and way they are communicating their words. All right. Placing the scenarios in the right place. In the right place, okay. Yes. The adjectives were right on point, absolutely. Any other answer? Yeah?
expressions, body language, controlling volume. Okay, great. The same? Any different answers do we have apart from the points we have covered? Yes, sir, you. Sir, because of the hook and the suspense at the end. The hook and the suspense at the end. All right. आप भी जल्दी से बताइए. Expressions. All right. The way they were speaking was not felt like a speech but a more of an interaction. Interaction. अब ये जो hook and suspense की बात कही है मैं इस पे hit करना चाहूँगा. Of course, all the other points are correct. We are actually going to be talking about them in a minute. But जो चीज़ मुझको personally सबसे ज़्यादा entertaining लगी वो पता है क्या थी? 2 मिनट में respectively दोनों स्टूडेंट्स ने सिर्फ मुझको एक टीजर नहीं दिया बल्कि एक पूरी कहानी सुना दी. It felt as if the answers had the proper beginning, middle, end. They had a proper hook, but they also had a suspense in the middle point, and finally they had a call to action. When you are delivering, let's say, a speech about a business plan or whatever it might be, a great concept, an innovative idea you have come up with, until and unless it does not have a proper structure in the communication of it, it does not have a proper call to action, why would I even care about it? Yes, आपने मार्शियन के बारे में बोला, स्पेस की तो लाखों करोड़ों मूवीज बनती है. Yes, आपने गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर के बारे में बोला, मर्डर मिस्ट्री तो लाखों करोड़ों लिखी जाती है. Why did these two answers stand out when they were shared? Because the pitch had a proper beginning, middle, end beyond all the other gestures and articulation and adjectives and expressions and body language which we will talk about. But that structure is what builds communication from the grassroots level. तो अगर इस structure को हमको build करना है तो हमको काम करना पड़ेगा on the rule of 5C. जल्दी से सब लोग यहाँ पे मुझे अपनी 5 fingers दिखाओ. I know this is gonna feel like आप लोग kindergarten दोबारा आ गए, but you have to do this. 5 fingers. Raise your hand. I want to see this clearly. Can we kindly have a picture of all these students as well? The 5 fingers, right? We have the 5 fingers over here. Now count them with me, okay? As loudly as possible. 1, 2, 3, 4, and 5. ठीक है? अब जल्दी से हाथ shake करो. Let the blood circulation come. Relaxed. Raise the hand back up. Now, this time we are going to be counting these 5 fingers not with numbers but with words. Words जो कि आपकी communication skill की foundation होते हैं. Content, clarity, creativity, connectivity, and confidence. हाथ शेक किया जाए, relax किया जाए. Once again, back up. Content, clarity, creativity, connectivity, and confidence. Now this time, this third and final time, I'm not going to be speaking, you will be speaking on your own. Number 1 is, number 2 is, number 3 is, number 4 is, and number 5 is. All right, अब जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए. Wonderful, wonderful. Content, clarity, creativity, connectivity, and confidence. I know आपको शायद ऐसा फील हुआ होगा जैसे कि you know LKG, UKG में आपको पढ़ाया जाता है तो ऐसे हैंड जेस्चर्स कराए जाते हैं. But then think about it. सबसे पहले आपको बोलना कब सिखाया जाता है? When you are barely a toddler, right? When you are barely 2, 3, 4 year old, तब आप अपनी basic vocabulary build up करना शुरू कर देते हैं. And it works for the entirety of your life. It does matter a lot what all you learn at that young age with the simplest of approaches. तो अगर उस same simpler approach को use किया जाए even as a youngster to build your communication skills, what's wrong with that? And once these skills are developed, I can assure you, not just while pitching your ideas, but also while trying to persuade your friends to watch your favorite movie, you are going to feel that yes, you are able to create an impact. And with that being said, let's see how these 5 pillars are supposed to be worked out. सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कम्युनिकेशन के कंटेंट की. कंटेंट क्या होता है एग्जैक्टली? कोई मुझको एक सेंटेंस से बताओ, बैठे बैठे. यू डोंट हैव टू इवन स्टार्ट अप. या कंटेंट होता है बेसिकली
कंटेंट बेसिकली वो होता है जो मतलब हमारा जो हमको बताना है या डेटा जो हमारे पास है वो हमको एक्सप्लेन करना है, वो हमारा कंटेंट हो गया. ठीक है, ऑलराइट. लाइक फॉर एग्जांपल, लेट्स से यू आर डिलीवरिंग अ बिजनेस प्लान. ठीक है, आप अपने बिजनेस प्लान को एक पैनल के सामने शेयर कर रहे हैं. यहाँ पे आपका जो स्पेसिफिक कंटेंट है वो क्या क्या इंक्लूड करेगा? इट विल इंक्लूड एन एग्जीक्यूटिव समरी, यानी कि आपका जो बिजनेस प्लान है, आपका जो इनोवेटिव आइडिया है, अगर आपको उसको 15 सेकेंड्स में या 30 सेकेंड में पिच करना है ड्यूरिंग एन एलिवेटर राइड, लाइक इट्स कॉल्ड एन एलिवेटर पिच, हाउ वुड यू स्पीक इट आउट? यहाँ पे 2 मिनट का मूवी ट्रेलर आप लोगों ने बताया, बट व्हाट अबाउट द 15 to 30 seconds का मूवी ट्रेलर? Even that can grip your attention, right? So in a similar way, telling me what your innovative idea is all about, but within the 15 to 30 seconds is your executive summary. That's the first part of your content. The second part is about the problem statement. Not just telling me a vague idea or the concept of what your startup is going to be, but telling me exactly किस प्रकार की दिक्कतों पे आप काम करने वाले हैं. Is it something pertaining to the mental health issues rising amongst the youngsters? Is it something pertaining to the water management? Is it something pertaining to the plastic usage and recycling, which is still something that needs to happen on a much larger scale? Is it something related to skill building? Whatever it might be. कौन सी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने वाले हैं? That's the second big part of a business plan. The third big part of your business plan is all about your approach. You know that if you want to help the youngsters with their psychological wellness, जैसे ही आप ये बात मेरे सामने कहोगे, मैं कहूँगा बट ऑलरेडी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस तो लाखों करोड़ों प्रोग्राम एग्जिस्ट करते हैं. ऑलरेडी ग्लोबली मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं. व्हाट आर यू गोना डू डिफरेंट अबाउट इट? When that is a part of the business plan, exactly what kind of a unique approach you will have is when your business plan begins to stand out. Which brings us to the fourth point, target audience. यंगस्टर्स की मेंटल हेल्थ पे आप काम करने वाले हैं. बहुत ही चैरिटेबल बात आपने कह दी, बट ये बहुत ही ब्रॉड बात आपने कह दी, बहुत ही फिलोसॉफिकली लार्ज बात आपने कह दी. It is not achievable in just a day or in just a month. You have to be specific about it. Your target audience is to primarily focus on the youngsters of New Delhi for starters, or just focus on the youngsters of Uttar Pradesh for starters while developing their psychological wellness. That is your target audience. That is something you are clearly stating in your content. Then of course you want to grow beyond that, but that is the starting point of the target audience. And finally, where does the revenue come from? हमने एक बार को आपके स्टार्टअप को सारे फंड दे भी दिए खड़े हो जाने के. अब उसके बाद क्या? How will you bring us the results? What kind of, let's say, a 5-year plan or 10-year plan you are able to see कि 5 year में you will be profitable or 1 year में you will be profitable, whatever that might be. What kind of an image can you visualize walking down the line when it comes to the specifics of the finances? ये है आपके बिजनेस प्लान का स्पेसिफिक कंटेंट जिस पे नेसेसरली काम करना है. बट जैसे कि मैंने आपसे कहा, कम्युनिकेशन सिर्फ हम लोग यहाँ पे बिजनेस प्लान और स्टार्टअप के बारे में नहीं कह रहे हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर इन ऑल द एवेन्यूज ऑफ लाइफ. सो दिस कंटेंट बेसिकली इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू शेयर विद whomever you are communicating. Which brings us to the second point, clarity. यानी कि उच्चारण में स्पष्टता होनी चाहिए और आपके मन में भी जो बात आप कह रहे हैं उसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए. क्रिएटिविटी, विल टॉक अबाउट इट इन अ मिनट. कनेक्टिविटी, ऐसा ना लगे कि आप किसी पे बात कर रहे हैं, बट ऐसा लगना चाहिए कि आप उनसे बात कर रहे हैं. And then finally, confidence, the king of it all. Now, how to develop these 5 pillars? Let's quickly run through that lane as well. सबसे पहले आपका content. Content कैसा होना चाहिए? Number 1, authentic content वो होता है जहाँ पे आप बातें pretend नहीं कर रहे हैं. Let's say you are telling me in your business plan that your goal is to improve the psychological wellness of 50,000 people in the first year because आपने already 5,000 youngsters को guide किया हुआ है. Okay, that's a great content. Show me the proof. Show me the receipts of it. Show me the pictures and the invoices and the details of the sessions you have conducted already. If you think कि बड़ी-बड़ी बातें कह देना काफी होगा, then that is wrong. यहाँ पे आपने movies and books के बारे में pitch किया. Now I go on to watch those movies. If I'm not able to see any of that, I would feel, wait, this trailer sort of tricked me.
will I even want to watch another movie with these actors or this production company next? Maybe not, because I felt that there was a lack of authenticity. मेरा देखने का मन तभी करेगा दोबारा उस प्रोड्यूसर की मूवी को when I feel that the first time they pitched their content it was authentic. Which brings us to the second point. It has to be factual. Factual का मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ स्टैटिस्टिक्स और नंबर्स की बात नहीं कर रहे, बट जो भी बात आप कहना चाह रहे हैं, जो भी आपका मान लीजिए बिजनेस प्लान है, वो तथ्यों पे आधारित है. जो भी आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो मेड अप नहीं है. If you say that you want to help the youngsters and their psychological wellness, we know that it is a fact that youngsters are struggling with depression and anxiety and nervousness. So it becomes a fact that you are willing to substantiate with specific approach and specific solutions. Vague, philosophical, हवाई बातें नहीं, लेकिन exact आपका एक्शन प्लान क्या होगा, exact आपका अप्रोच क्या होगा. आप सेशंस की मदद से उनको गाइड करना चाहते हैं, आप प्ले स्टोर पे अवेलेबल एक एप्लीकेशन की मदद से उनको फर्दर गाइड करेंगे, आप व्हाट्सएप पे रूटीनली उनको मैसेजेस और कोटेशंस भेज के मोटिवेट करेंगे. देयर इज अ क्लीन स्पेसिफिक एक्शन प्लान for the problem that you are trying to code, which brings us to the second point, clarity. सिर्फ अपनी प्रॉब्लम प्लान के बारे में सोचना काफी नहीं होता, उसको क्लियरली शोकेस करना मैटर्स अ लॉट. द पॉइंट इज क्लैरिटी वर्क्स आउट इन टू मेजर वेज. फर्स्टली सेल्फ क्लैरिटी. आपका जो भी बिजनेस प्लान है, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी आइडिया इनोवेटिव है, वो काम तभी करेगा, वो फंड्स तभी ला पाएगा आपके लिए जब आपको खुद उसके बारे में क्लियरली पता होगा. इट्स नॉट समथिंग जो कि आपने कॉपी पेस्ट कर दिया है फ्रॉम अनदर अवार्ड विनिंग पिच which was shared in a certain competition 10 or 20 years back. No, it is something that you have developed a personal clarity and knowledge and awareness about. And at the same time, conceptually you are able to convey it as well in the simplest of form. भारी भड़कम डिक्शनरी से शब्द उठाकर उसको बोल देना काफी नहीं होगा. कॉन्सेप्चुअली सरल शब्दों में उस बात को बता पाना ही आपके ऑडियंस, आपके पैनल पे एक इम्पैक्ट बना पाएगा. आप ये सोचो, आज के यहाँ पे सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं? आप लोगों को आ रहा है ना? ऐसा फील हो रहा है दैट वी आर हैविंग एन इंटरेक्शन जो कि आपको समझ में भी आ रही है. व्हाई? अगर मैं यहाँ पे खड़े होके सिर्फ एक स्क्रिप्ट से रीड करता विद अ वेरी कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी, क्या कुछ समझ में आता? नो. आपको ऐसा लगता है कि बस एक बोरिंग सी स्पीच सुनाई जा रही है. You are feeling like you are in the part of an interaction because the conceptual details are being shared with the simplest of words, the simplest of statements, the simplest of activities. Verbal clarity matters a lot as well. आपके उच्चारण में स्पष्टता होनी चाहिए. हर शब्द को क्लियरली बोलिए, हर शब्द को आसानी से एक प्रॉपर पेस पे बोलिए. सांसें लेते हुए बोलिए, सांस रोक के आपको 2 मिनट की बात नहीं बोल देना. Absolutely not. Keep on breathing. But keep on sharing your words at a pace that does not feel too slow or too fast either. Then comes the point of creativity. Very simple, nothing too complex, nothing to be too worried about कि कैसे creative बनाया जाए जब आपको दिखता है कि creative तो सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं. Creativity is like, you know, something that people are simply born with. जिनके पास creativity नहीं होती, they simply cannot be creative. And that is a myth. Because creativity is not just about the greatest of plots or the stories. It is about being original. यानी कि आप अपने original self को authentically दिखा पा रहे हैं without feeling too nervous. It is about interactiveness. यहाँ पे आके आपके साथ सेशन हो रहा है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको एक भाषण सुनाया जा रहा है. आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे बात हो रही है. As much as I'm speaking, उतना ही शायद मैंने आप लोग से बुलवाया होगा. Maybe more, a little bit more in the session today. You feel like you are a part of the conversation. Questions के आंसर आपके मन में आ रहे हैं, questions भी आपके मन में लगातार आ रहे हैं. That is what makes you engage with the conversation. And then of course, finally, examples and anecdotes. यहाँ पे हम लोगों ने किसी भी बात को सिर्फ ऐसे नहीं कह दिया कि communication skills matter or you have to work on your pitch. No, we worked with specific examples. We worked with specific students sharing specific anecdotes, and that is what made an impact. But अगर impact को थोड़ा और बड़ा करना है तो फिर connect करना पड़ेगा अपने audience के साथ. Eye contact has to be maintained constantly. कहा जाता है ना कि अगर किसी स्टेज पे खड़े होकर बात कर रहे हो, डर लगे ऑडियंस को देख के, तो इमेजिन करो जैसे आसमान में बटरफ्लाइज उड़ रही हैं. यार अगर मैं ऐसे आपसे बात करूंगा तो क्या आपको अजीब नहीं लगेगा? Of course you will feel that.
अगर आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, बट अगर आप अपने जॉब इंटरव्यूज की आईज को 2 सेकंड भी लगातार मैच नहीं कर पा रहे, they will instantly know that this person is not confident to share their thoughts authentically, or even worse, are they even speaking truthfully or not? So this eye contact maintains that sense of honesty between you and the listener, which also is dependent on your body language. कई सारे स्टूडेंट्स ने बोला अगर hunched back के साथ आप बात कर रहे हैं या कांपते हाथों के साथ आप बात कर रहे हैं, it will instantly shrug your audience away. It's only when you are standing tall with your back straight that even आपको personally अंदर से ऐसा लगता है कि I am confident enough to share my thoughts. Even if vocabulary कहीं पे बिगड़ सकती है, language पे command कहीं पे बिगड़ सकता है, it's fine. I feel like this matters and I'm standing in front of an audience that is listening to me, and I feel joyous to speak as I go ahead. Which brings us to the final point, hand gestures. अब hand gestures को लेके एक myth ये है कि कभी भी अगर बात कर रहे हैं तो hand gestures बहुत सारे होने चाहिए. This is incorrect. यहाँ पे मैं आपके साथ एक सेशन का इंटरेक्शन कर रहा हूँ. We are having sort of an informal conversation every now and then as well, right? वहाँ पे hand gestures fine है. अब अगर मान लीजिए आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे आप एक्सेसिव हैंड जेस्चर्स करना शुरू कर देते हैं, you are done. It's not going to create an impact. It's simply going to scare away your listener. क्योंकि ये जो हैंड जेस्चर्स का गेम है, it is dependent on the situation. अगर आप एक बहुत ही फॉर्मल सिनारियो में हैं, जहाँ पे आप एक फॉर्मल सीरियस बात कह रहे हैं, वहाँ पे एक्सेसिव हैंड जेस्चर्स do not, let's say, matter that much as they do when you are in an informal conversation, जहाँ पे you need to feel like a human, you need to feel like a person who is trying to communicate like a person as well. But even being a person, the best way to create an impact, to bring the funds, to persuade someone, and to make sure that your words are memorable for your listeners, one thing matters the most: confidence. How does one develop confidence? Any creative answers, any creative approaches? Yes sir, you. By taking experience. By taking experience. थोड़ा सा explain करिए. Mic दे दीजिए उनको. By taking experience, what does that mean? Like when we start doing something, we should take experience. We should go in some like a competitions or something. Like this is the one, and my teacher just told me that you should take confidence and you should take experience from there and how everyone behaves and like that. Okay, all right. So you are saying कि खुद को थोड़ा सा टेस्ट करना चाहिए, खुद को थोड़ा सा competitions contest में लाके you have to test your waters, you have to test your skills. All right. Okay. Okay. Yes, you at the very back. Socially interactive people. Socially interactive people. Mic पे explain कीजिए. Like socially interact with people, like having a short talk with your maid only, or the person sitting next to you in the bus, or in a competition. Do a short talk, ask their name, how is the person, which school they study, and something like that only. Okay, so you are saying that in order to develop confidence, you have to have small talks even when you feel anxious. General talks, जिनका कोई बहुत ही बड़ा philosophical concept ना भी हो, still you are just trying to communicate. Okay, all right. Yes, you ma'am. Yeah. I feel like when we are trying to gain confidence, everyone says we need to go to competitions, right? But why would a teacher send us there when she does not gain confidence in us? Okay, so I feel like maybe having some small talk interactions with the teachers, giving answers, performing on stages, so that teacher believes in us that at least we can go there. We are the ones who gain experience, and after that we can actually go to proper competitions and win there. Okay, all right. Yes, the next student. Yeah. Come out of your comfort zone and explore all the opportunities that you are getting. Okay, all right. You sir. जिससे पहले आपने बोला कि जो 4C's आपने जरूर बताया पहले, अगर आप उन पे ग्रिप पहले अच्छी कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही डेवलप हो जाएगा. Sure. और जैसे एक स्टूडेंट्स ने बोला कि प्रैक्टिस करते रहो, और एंड आई थिंक दिस इज आल्सो द मेन रीजन कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े. दैट्स व्हाट माय थिंकिंग इज. So you are saying कि फंडामेंटल्स एक बार स्ट्रेंथन कर लिए जाए तो वहाँ से कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बिल्डअप होने लगता है. Yes, you ma'am.
meditating can also help in building up confidence. Okay. Meditating, how? Just explain a bit about that. So, going into ourselves, seeing into ourselves can help us build up the confidence that we know that we can do it. Sure. Willpower increases when we meditate. Alright, okay, wonderful. एक बार जोरदार तालियां हो जाए सारे answers. Such wonderful approaches. Now I know that there are so many raised hands जिनके साथ अभी मैं interact नहीं कर पाया हूँ, but no worries. कृपया आप लोग अपने answers को about how to develop confidence with your unique approach एक छोटे से quotation में या छोटे से statement से लिख के हमारे teachers के साथ share कीजिए. We will be sharing that, we will be circulating that with AIM as well. ठीक है, तो आप लोग को अपने answers जरूर share करने हैं. एक आंसर मैं भी ऐड करना चाहूँगा, just an addition. Most of you have already covered brilliantly how to develop your confidence, but just one addition I would like to make is that confidence का lack dependent होता है एक specific scenario पे with which majority of youngsters, especially in the modern world, are dealing with. आप कोई बात कहने से पहले ही खुद को ये बोल देते हैं that do your words even matter? When you're sitting with a crowd of 100, let's say some of them raised hands, some of them, took the initiative to share their thoughts. All of you had the answer. I can tell you with guarantee, even those who are saying that they do not have any answer, they do have an answer. They do have a unique approach. They just felt like, does it even matter? क्या मतलब ये होता है कोई ऐसे सेशन में बैठ के अपना आंसर बोल देने का या बात कह देने का? या तो लोग जज करेंगे या तो बातों को हवा में उड़ा दिया जाएगा and it would not result to anything. Before even speaking or sharing or trying out what could be the outcome of sharing your answer or interacting for the first time in front of a crowd, you have already told yourself कि अरे पहले से ही किसी ने हाथ खड़ा कर लिया है तो मुझे बोलने की क्या ही जरूरत है. For as long as you keep demotivating yourself, बड़े से बड़े startups के ideas और innovative business plans को तो आप भूल जाइए. But even एक college के admission का जो interview होता है, जो job का interview होता है, even अपने मम्मी पापा से खुल के बात करना, अपने दोस्तों के साथ खुल के बात करना भी आपके लिए एक hurdle ही लगेगा, एक anxiety inducing moment ही लगेगा. Why? Because you are constantly feeding yourself just one simple message. Does it even matter to communicate? The moment you tell yourself that yes, maybe today I felt anxious, maybe today I felt nervous, right now I'm going to bed and tomorrow when I wake up, I will make an effort to sleep. Even if nobody else appreciates, I will appreciate myself. Even the moments of nervousness and anxiety when I did take a step and for others it felt ordinary or usual or normal, but for me it was something very big. Even if they do not make it out or appreciate it from all the other moments, I will be there to tell myself, yes, this did matter. Me raising my hand, sharing my answer, speaking it out, sharing my thoughts and my ideas, even as a young kid, it does matter. The moment self-appreciation replaces the self-criticism is when confidence begins to rise. So आशा करता हूँ कि आज के हमारे इस इंटरेक्शन में आपको कुछ सीखने और जानने को मिला होगा, मजा आया होगा. Make sure that these communication skills are not just restricted to your business plans, but you try to take them to the other avenues of your day-to-day life too. अगर कोई भी question या doubt है तो आप मेरे साथ भी interact कर सकते हैं on www.yashtiwari.org, at Yash Tiwari Speaks on all social channels and on Yash Tiwari. So thank you so much for being a brilliant audience today. Had a great time interacting with you all and thank you so much once again.